श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनौ ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भौ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानम् पीताम्बरकरविराजित शङ्खचक्रकौमोदिकी सरसिजां करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये समनिसं हृदि भावयामि। ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अधः श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दुष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्धात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्त्वावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे भाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुनपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्या वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एतेदावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवन पुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वयत्तत्पराभ्यमपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतेर्भूतेन्द्रियैस्तैव पुरति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यादच्छादितपरसुखचिद्धर्भनिर्भास रूपम् तस्मिन्नन्द्यारमं ते स्तुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे निल्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्वत्कलास्येव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यं तैनो वोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादि काले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधार ललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्
लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोगमन्तः सिंचत्सं चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावघा जीव भाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजित मया नैव मध्याभिजाने नोचिज्जीवाः कदौ वा मधुरतरमिदं तद्वत् तद्वत्पुच्छिद्रसार्थ नेत्रैः सोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्तै सततमपि पुरस्तेरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं विशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्दिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्तौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् तैयुच्छैरारमन्ति प्रतिमदमधुरे चेतनाश्पीतभाग्य त्वं चात्मा रामये वैत्यतुलगुणगणाधार सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिलविदसि न क्यापिते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीयं श्रीभगवन्महिमानवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम सूर्यसर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्बन्यकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभम् तद्रूपौ वनमाल्यहारा पटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकं कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कशङ्गतगदा शङ्कारि पङ्केरुगाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चित काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चित काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्चिदम्
यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोपाश्चर्यम् भुवनेन कस्य कुतकम् पुष्टाति विष्णो विभो तद्दादृङ्मधुरात्मकं तव वपु सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमौत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेमस्थैर्यमायादचापलबलाच्चापल्य वार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृते वेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्यन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जना तेष्वेषा वसति स्थिरैदयित प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परिचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमं च यत्यङ्गकम् व्याशिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्द मूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्ष्याभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तरमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःस्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणो यत्कर्म योगाभिदं तद्दूरेत्य फलैर्यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्तो व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो तत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानाच्छर्य निर्मन्मलान् भोदे भक्तिपथे तवाप्युचिततामायन्ति किं तावता क्लिष्ट्या तर्कपथे परं तव पुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्धत्वमृते विचिन्त्य बहुभिस्सिञ्जति जन्मान्तरै तद्भक्तिस्तु तधारसामृतझरी निर्मज्ञनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्वयि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिष्टशार्द्रता दुततरं वातालयादीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिता स्मरन्तो नृपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथा चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहितः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगति मसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरजो नारद मुख चरन्ति सस्त्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिः पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेदभ्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगम वचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भवद्भक्तिर्स्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् किल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलं महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवक्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमधते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधिप्रसभजलिते मामकरुधि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूप मुदीयात् उदं च द्रोमां चोगलित बहुहर्षास्त्रिनिव यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादिसत्त्वयि खलु परां चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयातहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्तो
ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिव्यक्तो नतिनुतिनिशो वा विरचयन् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अद भगवद्रूपवर्णनं नाम समाप्तं नारायणाखिलो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो नवनं भगवन्नमस्ते अदय तृतीयदश अदतृतीयदशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च समाप्तं एंड बजनी